Okay, I'll present the screen now. Shakir, Shakir, Yes, sir. Yes, sir. is it visible? The screen is visible or not? No, sir. No, I can't see. I have shared the Full black. screen. Others? Okay, I'll share it once again. Please. Yes, sir. Can see. Okay, now you can see, na? Okay, so wait a minute. Let's start with. Okay, so here, as I told you in the last session, I discussed about how to calculate the strength of bolt. Okay, I told you there are two categories of bolts. One is bearing type bolts and HSFG bolt. Bearing type bolt is also called as black bolt or ordinary bolt. Okay, so I discussed about the connection, okay, failure of connection and types of bolts in the last session, and even I shared the PDF in the group. Okay, and if you if you have queries, you can go back to the PDF, or still if it is not clear, you can contact me. Okay, so here as I told you in the last session, I discussed about the types of bolts. Okay, in that I discussed about two types of bolts. One is uh, bearing type bolt, which is also called as black bolt or ordinary bolt, and one more is called as HSFG bolt. One more is called as HSFG bolt. That is high yield strength, that is high strength frictional grip bolts, which is called as HSFG. Okay. So in the today's session, I'll be discussing the problems over how to determine or how to calculate the design strength of bolt. Okay. That is for ordinary bolt or black bolt. How to calculate the design strength of bolt for ordinary or black bolt. Okay. Or the bearing type bolt. Okay, so even I discuss about how the force transfer mechanism will work in the types of bolts. So in bearing type bolt, how the force will transfer? Can anyone answer? How the force will transfer in bearing type bolt? Yes, Shakir. Yes, anyone? Yes. I discuss about the force transfer. So with bolt, this thing. How the bolt will how the force will transfer to bolt in bearing type connection. अरे मैंने बोला था ना, force that bolt has to bear the load, that why it is called as bearing type connection, na? The force transfer, Yes, sir. To the bolt. the force transfer to the bolt, it will be by bearing. Okay, it will by bearing. Okay, the plate moves or slips, and when the plate moves or slips, it will come into contact with bolt. So during that, what will happen? If it is come into contact with bolt, directly the force will transfer over to the bolt. So that's why the bolt has to bear the load. The bolt has to sustain the load. That's why it is called as bearing type connection. In HSFG bolt, what will happen? The plate will not move. Okay, the bolt will be tightened to the high tensile stress, and it will not allow the plate to move. So that time what will happen? The force will transfer by friction between the two plates.
Is it correct, Rasha? Rasha, Yes, sir. is it correct? Yes, sir. Okay, okay, very good. Then we'll discuss about the next point, that is how to get the design strength of bolt now here. Okay, now we have problems on design strength of bolt. So I'll read out the statement of the problem here. So the first problem is calculate the design strength of 20 mm. So they have given the diameter of bolt as 20 mm. Okay, 20 mm bolt. Okay, and the grade of bolt, the bolt of grade property class 4.6 for the following condition. Okay, are you getting my point? What they asked? They asked to calculate the design strength of 20 mm diameter bolt, and for that the grade is given. What is the grade of the bolt is 4.6. What does this indicate? 4.6. The grade of bolt is 4.6. What does this indicate? Anyone? Komal, Seema, Somia, you are attending the session every day. Yes, anyone? Sir, the tensile strength. What tensile strength? 4.6 indicate the ultimate strength and yield strength. Correct? Ultimate strength and yield strength. What does it mean by 4? 4 means what? 4 के meaning Ultimate क्या है? tensile strength, sir. अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो 4 का मीनिंग क्या है? 4.6 दिया ना मैंने बोला आपको लास्ट सेशन में 4.6 ग्रेड दिया है, तो उसका मीनिंग क्या है? डायामीटर. हाँ, डायामीटर. कोमल, वेयर आर यू? Thickness. अरे बाबा, नो, the diameter of bolt is given 20 mm. Yes, very good. Sir, it is a yield stress. Yes, Somia, you are very good. So 0.6 is yield. 0.6 is yield stress, 4 is ultimate stress. तो 4 का मीनिंग क्या है? The bolt having ultimate strength or the ultimate stress is how much? 400 Newton per mm square. Is it right? Yes, sir. Yes. 4.6 means what? The bolt having ultimate strength is 400 Newton per mm square. अरे मैंने आपको लास्ट सेशन कितने बार बोला आपको, अगर 4.6 रहा तो कैसे लेने का, 5.6 रहा तो कैसे लेने का. I have told that and I have shared the table also. In table also I explained and I have shared the PDF. At least once you go through before attending the session. कितना टाइम लगेगा आपको? 10 मिनट टाइम लगेगा उसको अगर ओपन करके आप देखोगे तो. Why I am trying to say, when I start the problem, फिर से मुझे वहां पे if I go back again and again explaining the things from the previous session, तो क्या होगा फिर? It will be wasting of time. Okay, so I'll explain once again. 4.6 मतलब क्या है? 4 is the first digit of ultimate strength. 4 मतलब 400 Newton per mm square. And 0.6 means what? 400 into 0.6 you have to multiply. So you will get it 240 Newton per mm square. That is yield stress. Okay, ultimate stress and yield stress. Now is it clear? Anyone? Is it clear? Shakir? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, so now they have given the statement of the problem is what? We have to determine the design strength of 20 mm diameter bolt. मतलब क्या हमको निकालना है? What I have to find out? We have to find out 20 mm diameter का bolt है, वो कितना लोड ले सकता है? How much load it can take? A 20 mm diameter bolt, how much load it can take? What should be its strength? कितना लोड ले सकेगा? What is its power? What is its internal resistance? What is its strength that you have to calculate? Okay. Now they have given in this particular joint. इस joint में what is this joint? कौन सा joint है ये? Anyone? Anyone? Lap joint. Yes, very good. It is a lap joint. In between two plates, the bolt is provided here. See, this is the bolt. The bolt is provided here. Okay. And the diameter of bolt is how much? 20 mm. The diameter of bolt is 20 mm. Okay. And the thickness of two plates, it is 12 mm. One plate is having 12 mm. 12 mm
and 12 mm. Okay, these two plates, okay, are joined or are connected by using this bolt, and we have to find out how much force can carried by this bolt. Okay, so first of all, see, this is very important. You have to note down the given data. What are things are given? You have to note down that. क्या दिया यहाँ पे? First thing what they have given? Diameter of bolt. How much it is given? 20 mm. How much it is given? 20 mm. Then you have to find out diameter of hole. D is diameter of bolt. D naught is the diameter of hole made in the plate. Okay. This is also discussed in the last session. वो कैसे calculate करना है? D plus clearance. This is what? This is what? This is clearance. D plus clearance. So D is 20. Clearance is 2 mm. That is fixed. 20 plus 2, 22 mm. Okay. Then next, again, we have grade of bolt is 4.6. So FU is how much? FU. U is for ultimate. Ultimate. FU. F is stress. Ultimate stress. 2.6, 240 Newton per mm square. Is it clear? Given data. इसमें किसको डाउट है? Raise your hand if you have any doubts. No one having doubt? Seema? No, sir. Shashank? Shashank out of the meeting now. Here, sir. Having doubt? Huh? I'm here, sir. You are here, huh? Okay. Now tell me any doubts here in this? No, sir. Understanding. Understanding? Okay, very good. Dipesh? Dipesh? No doubts? No doubts. Okay, thank you. Now see, I have given a note here. One note I have given. So I told you in the bolts, the bolt will be, while manufacturing, it will be manufactured what? It will be fully threaded bolt or partially threaded bolts. Okay, I told you in the, I think maybe in the first session or second session, I told you, I have shown the bolt that was partially threaded bolt. Okay, so the bolts may be fully threaded or partially threaded. So that you can assume. So I have assuming the threads are intercepting the shear planes, means I have assumed fully threaded bolt. See, if it is not mentioned in the question, if it is not mentioned in the question, you can say assuming fully threaded bolts. Assuming fully threaded bolts. Only you write that. Okay, assuming fully threaded bolts. That you have to write. If it is not mentioned in the problem, okay, then I'll tell you what is the use of that. Okay, now we have design strength of bolt. Now we have to find out what? We have to find out design strength of bolt. So here first is what? Shear strength of bolt. What is the first? Shear strength of bolt. Okay, this is given in the code. This is given in the code. It is given as per clause number 10.3.3, page number 75. See, I have shared the code book in the group. Even I told you to download and go through once. Okay, this formula is mentioned on page number 75, clause number 10.3.3. Okay, see, I don't have two screens here to share that. Okay, either I have to share the solution of problem or either I have to share the code book. So I request you go through this clause, you go through the formula, and again in that if you have any doubts, you please come to me. Okay, so now the formula is given here. VDSB is equal to VNSB upon gamma MB. Okay, this is also discussed. Okay, VDSB is equal to VNSB upon gamma MB. Now what is VNSB? VNSB is given here. VNSB is what? FU by root 3. FU by root 3 into bracket of NN into ANB plus NS into ASB. NN into ANB plus NS into ASB. Now what is these two? What is these two? Maybe I'll share the screen for that. Another screen. We'll see. I'll show you.
शकीर, शकीर, यस सर। मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है, दिख रहा है कह रहे हो? नहीं ना? हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ ओके, यहाँ पे आपको बोल्ट दिख रहा है क्या? बोल्ट, यस सर। ओके, you can see this bolt is what? Shakir, can you tell me? So this is a bolt with nut. Bolt with nut, but it is partially threaded. It is not fully threaded. Yes, It is sir. not fully threaded. Okay, so see, I have discussed about all these things, the force transfer mechanism, everything. Okay, so then I'll come to the formulas. I have not discussed those formulas here. Here. Okay. See, this is shear capacity of bolt. I think I have discussed this. Okay. Shear capacity of the bolt. Okay. That is VDSB is equal to VNSB upon gamma MB. Okay. Okay. Shakir, is it visible now? Yes, sir, it's Shakir? visible. Okay. Shear capacity of the bolt. So here it is given VDSB is equal to what? VNSB upon gamma MB. So VNSB यहाँ पे दिया है FU by root 3 into bracket of NN into ANB plus NS into ASB. Now here the important thing is to listen here. These two things are very important. That is NN into ANB and NS into ASB. These two things are very important here. And these two things are dependent on the type of bolt, whether it is fully threaded bolt or it is partially threaded bolt. See, this is very important. I'm trying to highlight again and again. This is very important here. Please listen carefully. Okay. Here, NN into ANB and NS into ASB plays very important role. And these two are with respect to the type of bolt, whether it is fully threaded bolt or partially threaded bolt. Now I'll explain how to consider these two. How to consider these two, NN into ANB and NS into ASB. अभी यहाँ पे दिया है देखो, FU is the ultimate tensile strength of bolt, which is given 400. Okay. Now here, these things are very important. What is NN here? Number of shear planes with threads intercepting the shear plane. What is NS? Number of shear planes without threads intercepting the shear plane. And what is ASB? Nominal plane shank area of the bolt. ANB is net shear area of the bolt at threads. अभी देखो, यहाँ पे क्या दिया है? NN मतलब number of shear planes with threads intercepting shear plane. Okay. अभी देखो, अगर हम fully threaded bolts adopt करेंगे, if you are using fully threaded bolts, so what will happen? The threads will intercept the plane. The threads will intercept the plane. अगर हम partially threaded bolt use करेंगे, तो that time क्या होगा? It will become as number of shear planes without threads intercepting shear plane. मतलब suppose
Suppose if you have two plates like this, suppose we have two plates like this. Now we have two plates like this, okay, and in between we have the bolt here. In between we have the bolt here, okay. The bolt is like this, okay. Now if you assume fully threaded bolt, like if the threads are fully made in the bolt, तो क्या होगा? We have one interface here, okay. मैंने ये भी बोला आपको, अगर दो प्लेट है तो कितने इंटरसेप्ट होते हैं? शकीर, So one. how many will be intercepts? One. अगर दो प्लेट्स हैं तो एक इंटरसेप्ट होगा. अगर तीन प्लेट है तो कितने इंटरसेप्ट होंगे? 2. 3. यस, वेरी गुड. हाँ, तीन प्लेट है तो तीन इंटरसेप्ट कैसे होंगे मैडम? Sir, 2. Yes. Okay. See, if you see three plates, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है, like this. And in between there is a bolt here. Okay. तो कितने इंटरसेप्ट हुए यहाँ पे अभी? 2. यहाँ पे एक हुआ. Okay. So this is one intercept and this is one intercept. तो कितने इंटरसेप्ट हुए? दो. If three plates are there and if two plates are there, how many intercept? Only one. Means this mentions what? Nn and Ns. So either I take Nn or Ns. The value of these two will be 1. Is it clear now? Is it clear? Number of intercept planes, number of planes intercepting. So either it may be Nn or Ns. It will be 1. But it should not be Nn also or Nn and Ns also. Either it should be Nn or it should be Ns. I'll explain that how it will be now. Okay. अभी यहाँ पे देखो. Because we are assumed fully threaded bolt. Because we are assumed fully threaded bolt. तो उन्होंने क्या दिया है? The number of shear planes with threads intercepting shear plane. तो हमारे पास shear plane है एक. Only one shear plane is here. Because on one intercept, only one shear plane. One intercept, one face intercept, only one shear plane. Okay. And we have assumed number of shear planes, that is fully threaded bolt. We have assumed fully threaded bolt. So this term will become 0. This term will become 0. ये क्या हो गया अभी? 0 हो गया. तो in this formula, this will become 0. Is it clear? Is it clear? Yes, anyone? Yes, sir. देखो मैं और एक बार एक्सप्लेन करूंगा. We have two terms here. That is Nn into ANB, Ns into ASB. Okay. Nn और Ns क्या है? देखो यहाँ पे number of shear planes. Nn is number of shear planes with threads and Ns is number of shear planes without threads. Okay. With threads, without threads. In this case, I have assumed fully threaded bolts. I have assumed fully threaded bolts. मतलब क्या होगा? Ns 0 होगा कि नहीं? Because without thread is not there. Our bolt is not without thread. It is fully threaded bolt. So what will happen? This term will become 0. This term will nullify or it will become negligible. तो क्या हो गया? Ns हमारा 0 हो गया. Okay. So this term total ये दो सब मिलके 0 हो गया. Then we left with only Nn into A and B. Clear है? Clear है? Yes, sir. Please, anyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you have any doubt, please you can ask in the meeting right now only. किसको डाउट है? ओके, थैंक यू. अभी फिर से देखो. बोलो सर एक बार. हाँ, क्या हुआ? फिर से बोलो सर, वो नहीं समझा. NS 0 वैसा हुआ. ओके, मैं बोलता हूँ देखो और एक बार. यस, ओके. यहाँ पे देखो हमारे पास दो टर्म है, मैंने आपको पहले ही बोला है. Nn ANB, Ns ASB. अब ये दो टर्म किसके लिए है? ये टर्म है थ्रेड्स के लिए. अगर आप थ्रेडेड बोल्ट एज्यूम करोगे तो A टर्म आएगा
अगर आप पार्शियली थ्रेडेड बोल्ट एज्यूम करोगे तो आपको ए बोल्ट आएगा, ये टर्म आएगा। क्लियर है? दो टर्म है हमारे पास। अगर थ्रेडेड बोल्ट है, अगर इस प्लेन के बीच में थ्रेड्स आएंगे, दोनों प्लेट के बीच में, इंटरसेप्ट के बीच में थ्रेड्स आएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और अगर दोनों प्लेट के बीच में थ्रेड्स नहीं है, अभी यहाँ पे थ्रेड नहीं है, I'll do it once again, I'll show it. I'll redraw once again, that will be clear. Okay, अभी देखो, I'll redraw the diagrams. हमारे पास दो प्लेट है, लैप जॉइंट, ओके, उसके बीच में बोल्ट है, ओके। मैं एक एज्यूम करता हूं फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट, दीज आर दी थ्रेड्स। आई ड्रॉ वन मोर डायग्राम, ओके, एंड वी हैव बोल्ट हियर, ओके, बट इट इज पार्शियली थ्रेडेड। तो थ्रेड्स कहाँ है यहाँ पे बोल्ट में? थ्रेड्स यहाँ पे है, ओनली थ्रेड्स आर हियर, नॉट हियर, ओके। डायग्राम क्लियर है हुआ? अभी डायग्राम का किसको डाउट है डायग्राम के अंदर? प्लीज लेट मी नो। यस, किसको डाउट है डायग्राम के यहाँ पे? शकीर? नो सर। नो सर, नो डाउट। दोनों ओके, दोनों क्लियर है। अभी देखो मैं एक बार बोलता हूँ, हमारे पास दो स्केच है, एक स्केच है, दो प्लेट है, उसके बीच में एक बोल्ट है, बट दैट बोल्ट इज फुली थ्रेडेड। एंड वन मोर डायग्राम वी हैव, अगेन इट इज लैप जॉइंट विद अ बोल्ट, but threads are only here, not inside the connection, it is outside the connection, okay। अभी यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट कितने हैं हमारे पास, ये देखो, when two plates are connecting we get only one intercept between the plate, here also only one intercept, okay। अभी I'll ask the question to you people and you have to answer. In this diagram, in the first sketch, which part is intercepting the shear plane? Which part of the bolt is intercepting the shear plane? Can you tell me? Threaded part. Threaded. Yes, very good, very good, very good. Here in this first sketch, the threaded part is intercepting the shear plane. Second part में क्या हो रहा है? Shank. Yes, shank portion is intercepting. Shank or plane portion is intercepting the shear plane. Okay. अभी देखो, this is very important now. ये जो टर्म है NN into ANB, ये इसके लिए होता है, थ्रेडेड पार्ट के लिए। ये जो है ये इसके लिए होता है। Are you getting my point? Okay. अभी यहाँ पे देखो, हमने क्या एज्यूम किया है? हमने फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट एज्यूम किया है, मतलब ये हमारा कंडीशन है, दिस सेटिस्फाइज अस कंडीशन। तो कौन सा 0 होगा यहाँ पे? अभी कौन सा नलीफाई होगा? कौन सा टर्म नलीफाई होगा? हाँ, ये टर्म हमारा 0 हो गया। तो बचा कौन सा? FU/√3 इंटू NN इंटू ANB। ये हमने एज्यूम किया है फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट है। अगर एग्जाम में सी दे विल मेंशन इन द एग्जाम शंक पोर्शन इज इंटरसेप्टिंग shear प्लेन, तो उस टाइम कौन सा टर्म 0 होगा रे? कौन सा टर्म 0 होगा? NN 0 होगा सर। हाँ, उस टाइम में ए टर्म 0 हो जाएगा। नाउ इट इज वेरी क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रिस्पॉन्स, ओके। तो अभी देखो हमारे केस में, आई विल ओपन माय PDF नाउ। ओके, इज इट विजिबल शकीर? यस सर। ओके, अभी यहाँ पे देखो, हाँ देखो, VDSB इज VNSB अपॉन गामा में, तो मैंने 0 कर दिया। दिख रहा है आपको मैंने 0 किया इसको? आपको दिख रहा है क्या? देखो हमने यहाँ पे 0 किया यहाँ पे। यस, ओके, नाउ देखो यहाँ पे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड।
Now you substitute in the formula. Okay, substitute in the formula. देखो FU कितना है? 400 है. Correct? FU is 400. This is correct. FU is 400. उसके बाद NN into NB. अभी देखो NN is what? Number of planes intercepting. तो अगर lap joint है तो only one plane will intercept. Is it clear? मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, अगर 2 प्लेट्स है तो 1 होगा, 3 प्लेट्स है तो 2 फेस होंगे. एक क्लियर है? NN क्लियर हुआ क्या सबको? Yes, sir. Okay. Now next is pi by 4 into d square. What is NB? Area. Pi by 4 into d square. Now what is this 0.78? Why 0.7 is multiplied? This is very important again. देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में डाला है 1 is NN pi by 4 d square into 0.78. Why I have multiplied again into 0.78? Now I'll explain. So what will happen during threading? Thread होने के बाद क्या होगा? The area will reduce. Some percentage of the bolt will get reduced. Before threading, the area was 100%. Correct? After threading, what will happen? 22% will get reduced. तो बचा कितना रे? कितना बचा? 78. 78. वेरी गुड. जब बोल्ट प्लेन रहता है तो उसका एरिया रहता है 100%. उसका थ्रेडिंग होने के बाद क्या होता है? बाद में उसका एरिया थोड़ा रिड्यूस होता है. तो कोड क्या बोलता है? उसको आप रिड्यूस करो. 100. डोंट कंसीडर 100%. यू हैव टू कंसीडर 0.78% or you have to consider only 78% area of the bolt. So that's why you have to multiply 0.78 only for assuming fully threaded bolt. अगर इस केस में शांत पोर्शन होता था तो क्या होता था? यहाँ पे 0.78 की जगह पे क्या होता था? Full 100%. 100% means it will be 1. Now in this case it is 0.78. उस केस में क्या होता था? 1. It is 100% means 1. Okay, so 0.78. So 400 by root 3. NN is 1 because number of planes intercepting shear plane is 1 because it's a lap joint. Number of interfaces will be only 1 into pi by 4 into 10 square into 0.78. इसमें कुछ डाउट है? Please ask if you have any doubts. If you have any doubt, please ask. किसको डाउट है? प्लीज पूछो अभी. So show the previous page. हाँ देखो ये देखना है. ये मैंने बाय मिस्टेक किया है मार्किंग. ये इसको मत देखो. FU by root 3, FU 400 है डिवाइड बाय रूट 3. हमारे NS into ASB 0 हो गया. बचा क्या? NN into ANB. NN is number of shear planes, the number of intercepting faces 1 है. Okay. बाद में pi by 4 d square. ANB is pi by 4 d square, but the net area is 0.78, not 100%. Because of threading, it will reduce to 78%. That's what is 0.78. Okay. Shakir, is it clear? Yes, sir. Okay. You have to go to code book. Okay. Code book में formula दिया है. वहाँ पे everything is mentioned. Okay. Now if you calculate and check, we'll get the value of VNSB is 56590 Newton. अगर आपके पास कैलकुलेटर है किसके पास तो यू कैन गो एंड चेक. अगर वैल्यूज में कुछ करेक्शंस है, मिस्टेक्स है, देन नो प्रॉब्लम, यू रिकैलकुलेट एंड यू कैन डू द करेक्शंस. ओके. तो वी गॉट 56.59 किलो न्यूटन. ओके, 56.59 किलो न्यूटन. देन applying factor of safety, we get VDSB is equal to VNSB upon gamma MB. VDSB is equal to VNSB upon gamma MB. So VNSB we have already calculated here. So VNSB upon gamma MB. Gamma MB is the partial safety factor, okay, or factor of safety. It is 25%. So 56.59 divided by 1.25. So you get 45.27 kilonewton. 45.27 kilonewton. That is the design shear strength of bolt. Design shear strength of bolt. इसमें किसको डाउट है? प्लीज आस्क. देखो
whatever the number of problems I am going to solve, it is depend on same formula and everything. So if you have any doubts, please ask right now. Because I'm going to use or I'm going to continue with the same formula and same calculation. अगर आपको यहाँ पे कुछ doubt है, please ask. Sir, ASB is a area of one single, no sir, pi d square by 4. Pi d square by 4 ತಗೋಬೇಕು ASB. ಈಗ A and B ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ತಗೋಬೇಕನ್ ಸರ್ 0.78 into ASB. Pi by 4 d square ತಗೋಬೇಕಾ, but it is threaded part, so that's why we have to multiply 0.78 because we are assuming fully threaded bolt. ಹಾ ಸರ್, ಈಗ A and B ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ 0.78 into ASB ಆಗುತ್ತನ್ ಸರ್? ಹಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾ 0.78 into ASB. Yes, correct. 0.78 into area of bolt. Don't consider ASB. ASB ಒಳಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. 0.78 to area of bolt. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ? ಈಗ ASB ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ANB equals to 0.78 into ASB ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ಹಂಗ ASB ನೀವು ಫುಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರಿ, and if you take ASB is equal to ANB into 0.78, that is ANB is equal to ASB into 0.8, again the examiner will have some confusion and he will deduct the marks. Don't write anything, write directly 0.7 into area of bar, the area of bolt, 0.78 into area of bolt over, correct? For ANB only you have to multiply 0.78. ASB ke no multiplication, directly pi by 4 d square. Correct? Clear? Thank you sir. Okay, anyone still having doubts? Anyone? So that partial safety factor is same for all types of bolts? No. It is depend. So for HSFG it will change. High frictional strength grip bolts it will change. Okay. अगर आपको कुछ doubt है, so again you can refer. Suppose if you want to change की how it will change, it is given on page number 30, table number 5. You can check over that. But it will remain same. Gamma MB it will remain same 1.25 only. Okay. It is 1.25 only. अगर आपको एग्जाम में कुछ डाउट है, कहाँ से आया वैल्यू चेक करना है, तो यू कैन गो टू पेज नंबर 30 टेबल नंबर 5. वहां पे उन्होंने दिया है गामा एमबी कितना लेना है, गामा एमएल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल स्ट्रेस फैक्टर्स एंड दे हैव गिवन विद वैल्यूज. क्लियर सोमिया? Yes sir. ओके, नाउ वी गॉट 45.27. मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है, एक बोल्ट उसका कैपेसिटी कितना है, इट कैन टेक 45.27 किलो न्यूटन ऑफ लोड बिफोर शियर फेल्योर. आपको समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है? बिफोर शियर फेल्योर, बोल्ट फेल होने से पहले, ड्यू टू शियर फेल्योर होने से पहले, बोल्ट में शियर फेल्योर होने से पहले वो कितना लोड लेगा, 45.27 किलो न्यूटन. 20 mm डायमीटर का बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 शियर फेल्योर होने से पहले कितना लोड लेगा, 45.27 किलो न्यूटन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, it will take 45.27 किलो न्यूटन ऑफ लोड. Then we have to find out bearing strength of bolt. क्योंकि मैंने आपको बोला है the bolt may fail in shear or it may fail in bearing. It may fail in shear or it may fail in bearing. तो हमको दोनों को चेक करना है, शेयर में कितना लेगा और बेरिंग में कितना लेगा. तो बेरिंग का फॉर्मूला है अगेन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अगेन इट इज मेंशन इन दिस क्लॉज पेज नंबर 75. उसका फॉर्मूला है VDPB is equal to VNPB upon gamma MB. VDPB is equal to VNPB upon gamma MB. VNPB is given what, 2.5 kb DTFU. 2.5 kb DTFU. This is also given in the code book. ओके, अभी यहाँ पे देखो 1 by 1 हम कैलकुलेट करेंगे. डायमीटर दिया है, व्हाट इज द डायमीटर? डायमीटर इज 20. थिकनेस इज प्लेट थिकनेस. प्लेट का थिकनेस वहां पे कितना दिया है, 12 mm. प्लेट का थिकनेस कितना दिया है, 12 mm. FU कितना दिया है, 400. FU कितना दिया है, 400. नाउ इंपॉर्टेंट इज केबी. केबी हमको मालूम नहीं है. फॉर दैट अगेन कोड इज मेंशन. केबी इज लिस्ट ऑफ 1 2 3 4.
ये चारों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये चारों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है E डिवाइड बाय 3D नॉट, E डिवाइडेड बाय 3D नॉट। नेक्स्ट है P डिवाइड बाय 3D नॉट माइनस 0.25 एंड थर्ड वन इज FUB बाय FU, FUB बाय FU। ओके, सो व्हाट इज E हियर? E क्या है रे सोमिया? व्हाट इज E? व्हाट इज E? Rasha? 1.7 D naught, sir. E is yield strength। अरे बाबा, E is edge distance रे, मैंने बोला है ना, E is edge distance, edge और end distance। What is P? What is Pitch P? distance. Ma'am, pitch. Pitch, Yes, sir. pitch distance, yes। तो मैंने यहाँ पे दिया है ना, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था, एज और पिच डिस्टेंस कितना लेना है मैंने आपको बोला था। पिच कितना लेना है? मिनिमम 2.5 टाइम्स डी, करेक्ट। अगर डायग्राम में नहीं दिया है तो इन द फिगर इफ इट इज नॉट मेंशन तो यू हैव टू अज्यूम दैट। तो कैसे अज्यूम करना है? मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था, एज पर द कोड क्या बोलता है? मिनिमम पिच कितना रहना चाहिए? 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बोल्ट एंड एज डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 1.7 टाइम्स डी नॉट। कितना रहना चाहिए? 1.7 टाइम्स डी नॉट। ओके, तो 2.5 टाइम्स डी कितना हुआ? 50 mm। 1.7 टाइम्स डी नॉट कितना होता है? 37.4 होता है। मैंने किया है 40 mm। आई हैव राउंडेड ऑफ टू 40। आई हैव राउंडेड ऑफ टू 40। इसमें किसको डाउट है? एनीवन हैविंग डाउट हियर? एनीवन हैविंग डाउट हियर? No, sir. यस, ओके, थैंक यू। तो अभी देखो, so we got this, we got 0.606, this we got 0.507, this we got 0.975। अभी ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसमें आप मिस्टेक मत करो। ये FUB क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके, FUB is ultimate strength of bolt and FU is strength of plate or steel. This is fixed, always it is fixed, it is always fixed, it is 410 Newton per mm square, it is 410 Newton per mm square, हमेशा फिक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। This will change depend on the grade of bolt। हमारा अभी 4.6 है तो this will remain 400। ओके, तो चारों कैलकुलेट होने के बाद we got the minimum value of KB as 0.507। this what you can see here, we got 0.507। क्लियर है? इसमें केबी कैलकुलेट कैसे करना है? किसको डाउट है क्या? आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं करने का है, एवरीथिंग इज गिवन इन द कोड, जस्ट यू हैव टू नोट इट डाउन एंड यू हैव टू कैलकुलेट। किसको डाउट है? प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। Okay, I'll move on to further point. We have next T. We got P and PB 97.34 kilonewton, 97.34 kilonewton। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? तो इसका मीनिंग है 1 bolt of 20 mm diameter can carry a load, that is before bearing failure, before bearing failure it can carry a load of 97.34 kilonewton, 97.34 kilonewton। बेरिंग में कितना लेगा? 97। और शेयर में कितना लेगा? कितना लिया शेयर में? इन शेयर 45.27। ओके, सो therefore you can write, therefore the design strength of bolt, therefore the design strength of bolt is least of these two, least of these two। तो कितना है? 45.27 and 97.34, 45.27 and 97.34। तो कितना हुआ? It is the design strength of bolt is 45.27 kilonewton, which is also called as bolt value,
which is also called as bolt value. The design strength of bolt is also called as bolt value, that is BV. Bolt value is BV, that is 45.27 kilonewton. Means इसका meaning क्या हुआ? We concluded that a bolt with a lap joint, can take a force of 45.27 kilonewton. A bolt with lap joint, a bolt with this arrangement can carry a load of 45.27 kilonewton. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. If you have any doubt, please ask. Anyone having doubt, so that I can move to next. इसको doubt है? ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ? ಅದು 97 ಐತಿ ಸರ್. ಇದು 97 ಐತಿ ಸರ್. 90 ಏನಂತ? ಹಲೋ 96 ಬರತೈತಿ ಸರ್. ಬರ್ಲಿ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಗೋ ಸಿ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಶಶಾಂಕ್? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. You have to consider minimum between these two. Why you have to consider minimum only? Shashank or anyone? Why you have to consider minimum only? Why not maximum? Seema? Yes, Seema? Seema is not Factor of shift. Factor of shift in here. ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತನ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಕೇಳಾಕತ್ತೇನ, ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದಾವ ಬೋಲ್ಟ್ ವೆನ್ ಅದ ಬೋಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ, ಸೊ ಅದ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಶಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬೇರಿಂಗ್. ನೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಬೇರಿಂಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ. So bolt may fail in bearing or in shear. So we have to find out its strength. Before failure, how much load it can take. Before failure, how much load it can take, that you have to find out. And we have got that shear carried by the bolt is 45.27 and bearing it will carry 97.34 kilonewton. Okay. Then we have considered least value. Why? That is my question. Rasha, Somia? Sir, just before the bolt will fail, that's for that reason. Somia? No idea, sir. नो, अरे देखो बहुत बेसिक है. अभी एक बोल्ट दो वैल्यूज ले रहा है अपने ऊपर, दो लोड ले रहा है, उसके पास दो स्ट्रेंथ है, एक 45 है, एक 97 है. अभी मैं उसके ऊपर फोर्स डालता हूं, तो पहले कौन से इसमें फेल होगा वो? सोमिया आंसर बोलो. जो मतलब जो कम रहता है हाँ, तो वही स्ट्रेंथ होगा ना उसका, वही स्ट्रेंथ होगा उसका. 97 अगर मैं 97 लेके अगर उसको डिजाइन करूंगा तो फेल किसको होगा? वो 45 को होगा. तो उसका यूज क्या है? तो जो पहले फेल होता है वो उसका स्ट्रेंथ होगा. तो 97 को भी फेल होगा, लेकिन पहले किसको फेल होगा? 45 को. यस, करेक्ट. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसीडर लीस्ट वैल्यू. जिसमें पहले फेल होगा वो आपको हमारा स्ट्रेंथ होगा. ओके, वो 97 तक जाएगा ही नहीं, 45 को ही फेल होगा पहले. 97 वो बेरिंग में फेल होगा, बट उससे पहले शेयर में फेल हो सकता है ना. वो शेयर का वैल्यू कितना है? 45 है. So that why the bolt value is 45 or the design strength of bolt is 45.27 kilonewton. Yes, anyone having doubt, please ask. Please ask the question. Please ask the doubt. Shashank, very good. You are showing the interest. किसको डाउट है? प्लीज आस्क. आई थिंक सीमा इज आउट ऑफ द मीटिंग. ओनली sake of attending she is attending. किसको डाउट है? शकीर, दीपेश? No, sir, no. नो डाउट. ओके, सो आई थिंक अभी क्या है तुमको? नेक्स्ट क्लास कौन सा है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्लास?
So we are having lab. You have lab now. Sir Yes, is sir. taking lab. Yes, sir. Otherwise, I'll continue with another small this thing. Shall I continue? Shall I continue? Yes, sir. Shall I continue? Anyone? Yes, sir. Okay, I'll finish off within 5 to 10 minutes. Okay. अभी यहाँ पे देखो. Second case, single cover butt joint. First case में क्या था? लैप जॉइंट था. अभी ये क्या है? अगर सिंगल कवर बट जॉइंट है, व्हाट इज सिंगल कवर? ये आपको दिख रहा है, इज इट बट जॉइंट ना? ये बट जॉइंट है क्या नहीं? कौन सा जॉइंट दिख रहा है ये? कौन सा जॉइंट है? बट जॉइंट. सिंगल कवर है. कवर इज ओनली ऑन वन साइड. इस साइड में कवर नहीं है. वी डोंट हैव कवर ऑन दिस साइड. अगर इस साइड में कवर हुआ तो उसको बोलते हैं डबल कवर बट जॉइंट. करेक्ट? बट वी डोंट हैव कवर ऑन दैट साइड, सो इट इज अ सिंगल कवर बट जॉइंट. ओके. Now, what they have given? Again, single cover butt joint with a cover plate. Cover plate का thickness कितना है? 8 mm. Main plate का thickness है 12 mm. Cover plate का thickness कितना है? 8 mm. Main plate का thickness कितना है? 12 mm. अभी देखो यहाँ पे. Again, you have to use same formula. Design strength of bolt, that is bolt VNSB 400/√3. So again, you will get same value. हमने assume किया है. Again, fully threaded bolt हमने assume किया है. तो आपको सेम फॉर यू विल गेट सेम आंसर हियर. विल गेट सेम आंसर. देयर इज नो चेंज इन द आंसर बिकॉज यू अज्यूम फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट. तो इसकी वजह से एनएस 0 हो गया. यहाँ पे एनएस 0 और एनएन अगेन इट इज 1 ओनली. इज इट करेक्ट? एनएन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? एक हो गया, 2 होगा. हाउ मेनी 1. प्लेन्स आर इंटरसेप्टिंग? हाउ मेनी प्लेन्स आर इंटरसेप्टिंग? ओनली 1. यहाँ पे देखो एक ही है. यहाँ पे फिर से भी यहाँ पे पकड़ो या यहाँ पे पकड़ो. ओनली 2 फेसेस आर इंटरसेप्टिंग. तो एक शेयर प्लेन होगा. ओके. सिंगल शेयर, सिंगल प्लेन. नो सर. यस, सिंगल शेयर प्लेन. सिंगल शेयर प्लेन. एन इंटू एन बी इज π/4 d स्क्वायर इंटू 0.78. सेम यू हैव टू मल्टीप्लाई. तो आपको मिला शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. हियर इट विल चेंज लिटिल बिट. ओके. ये वैल्यू सेम रहेगा. हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी. This will remain same. So we got KB is equal to 0.507. The important is here T. अभी इस केस में देखो दो अलग अलग थिकनेस है. कवर प्लेट 8 mm है, मेन प्लेट 12 mm है. तो कौन सा प्लेट पहले फेल होगा रे? कैन एनीवन आंसर? 8 mm. Yes, 8 mm thickness plate will fail first. तो T we have to consider least of these two. इन दोनों में जिसका थिकनेस कम है वो हमको कंसीडर करना पड़ेगा. सो दैट टाइम यू हैव टू टेक T इज इक्वल टू 8 mm. सो T विल बी 8 mm. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो 2.5 kb d T fu. तो T इज 8. So we got the bearing strength as 64.8. Bearing strength as 64.89. So we got the bolt value again here 45.27 kilonewton. We got bolt value again 45.27 kilonewton. इस केस में किसको डाउट है? Anyone having doubt? I have not multiplied into D here. 2.5 kb dt. Okay, we have not. इस केस में किसको डाउट है? शशांक, ये डाउट है तपा? नो सर. शशांक, दीपेश, yes, other. Yesterday Manish has messaged me to share the PDF. Are you in the meeting, Manish? Yes, Manish? sir. Do you have any doubts? No, sir. Okay. Veena, Yes, sir. do you have any doubts? No, sir. No. Really, or only for other? Padmashri Kottur. Yes, sir. Padmashri, do you have any doubts? No, sir. Okay. Sanjita Kolkar.
Ranjita, Yes, sir. do you have any doubts for today's session? No, On today's sir. session, do you have any doubts? No doubts. Okay, No, okay, sir. okay, no problem. Chalo. So, No, sir. thank you very much for attending. Okay, okay. So, we'll end up the meeting here. And still, if you have any doubts, so you can have a discussion with me. You can contact me through WhatsApp or you can call me back. Okay, thank you very much.